Hello everyone, this is Raj Sanjan live for your knowledge and appreciation. Today I am going to describe the process of gametogenesis in humans. First of all, we should know about spermatogenesis in males that begins at puberty, and after that we would be able to study oogenesis in human female, which begins in fetal ovary. So time to discuss spermatogenesis. In the testis, the male sex organ, the principal sex organ, the primary sex organ, the main sex organ, you will find that a section is taken, and that section describes seminiferestibules. Seminiferestibule is the unit of testis in which male germ cells are found. When these remain immature germ cells are able to divide. When they become mature, they lose the power of division. Immature germ cells means spermatogonia. First, they exhibit mitotic division and then meiotic division to form फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ. बट थोड़ा सा यदि हम आगे सोचें इसके बारे में तो आपको ये समझना चाहिए, पहले प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं जो एक्स्ट्रागोनिडियल होते हैं, जो बाहर होते हैं गोनैड के बाहर, मेल गोनैड टेस्टिस के बाहर, वो आकर के यहाँ सेटल करते हैं. सो प्राइमोडियल जर्म सेल्स विच आर एक्स्ट्रागोनिडियल means outside the gonad, they develop during embryonic development. Later they settle here in the seminiferestibule of testis, and then they become spermatogonia, germ cells. When they remain immature, they start dividing, and start dividing to form kya? Spermatogonium start dividing to form what? One spermatogonium divides to form primary spermatocyte. Primary spermatocyte. How and why? इसका डिटेल आगे देखेंगे. Then primary spermatocyte divides to form secondary spermatocyte. Then secondary spermatocyte further divides to form spermatid. Spermatids are heavier, and then they develop to form this type of tailed structure, flagellated structure. Okay, these are called spermatozoan. So the process of formation of spermatogonia to spermatozoa, the entire process is called spermatogenesis. This is the formation of male gamete, and this process begins at puberty, sexual maturity, that is 11 to 13 years of age after birth in male. Human female, you can see spermatogenesis. Spermatogonium, then primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, then spermatids, then spermatozoan. All the spermatozoans in the entire animal kingdom, you can see flagellated, tailed structure for movement to go to fuse with ovum, immobile ovum. In Ascaris, it remains amoeboid. It is not flagellated, right? So one more important point is that the entire process in this course of development, you can see the nourishment is given by a large cell present here, and that large cell is called Sertoli cells or sustentacular cells or nurse cells. Okay, and from spermatid to spermatozoan, this phase of development is called
spermiogenesis or spermatogenesis, in which immobile, heavier spermatids are converted into larger tailed spermatozoans, lighter and tailed spermatozoans. And the release of a spermatozoan from seminiferous tubule is called spermiation. Spermiation. The formation of a spermatozoan is called spermatogenesis, and the ultimate release from the body is called the formation of spermatozoans in seminiferous tubules of testis is called spermatogenesis, and the final release from the body is called ejaculation. But here, from spermatid to spermatozoan, this phase is called spermatogenesis or spermiogenesis. And here these are nourished, these spermatozoans are functional. These are nourished by these cells, Sertoli cells or sustentacular cells or nurse cells. After getting nourishment, they are released in the body, and that phase is called spermiation. This change from spermatid to spermatozoan is called spermiogenesis or spermatogenesis, and the release from here, the release seminiferous tubule, from seminiferous tubule, the release of spermatozoans is called spermiation, and final release from the body is called ejaculation. And the total phase, the total process is called spermatogenesis. And one spermatogenesis takes about 64 to 65 days, means more than 2 months. So its development and release requires a lot of blood supply, nerve supply, but in ejaculation it takes few seconds. Okay, so these need to be preserved. Now the process of spermatogenesis with the help of sequential diagram we have understood. Now sequence. Primary, better to say, primordial germ cell. Primordial germ cell. PGCs, which are extragonadial. Initially extragonadial during embryonic development, means outside the gonad, male gonad, outside the testis. Primordial germ cells outside the testis, primordial germ cells outside the ovary. They develop and then they settle down in respective male and female gonads. यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, पीजीसीज इनको कहते हैं हम, पीजीसीज। ये एक्स्ट्रागोनिडियल होते हैं शुरू में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, उसी दौरान धीरे धीरे ये जाकर के गोनाइड्स में सेटल कर जाते हैं। गोनाइड्स मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये यहाँ पर जाके टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में यहाँ एडजस्ट कर गए। ये मान लीजिए प्राइमोडियल जर्म सेल है, ये डिवाइड किए, धीरे धीरे डेवलप किए, डेवलप करके अब ये बन गया स्पर्मेटोगोनिया। इसी को किताब में लिखा है मैच्योर जर्म सेल, यही स्पर्मेटोगोनिया है। आप स्पर्मेटोगोनियम लिखिए, ये 2n है, डिप्लॉयड है, 2n डिप्लॉयड, दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पर। अब ये स्पर्मेटोगोनियम पहले माइटोसिस के हिसाब से डिवाइड करेंगे, एक बार, दो बार ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे रिपीटेडली ये डिवाइड करेंगे। ये माइटोसिस है, एक्सक्यूज मी, माइटोसिस। अब ये माइटोसिस के द्वारा रिपीटेडली डिवाइड हो रहे हैं, 2n है, ये डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद अभी भी 2n है, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर द डिवीजन। तो ये मान लीजिए कि हम ये ले रहे हैं टाइप ए ले रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम, ये ए ले लिया और इसको ले लिया हमने बी। तो ए जो है स्टेम सेल की तरह काम करेगा, ये स्टेम सेल है, इसको आप रिजर्व रखिए, इसमें बहुत मल्टीपोटेंट सेल है। और ये बी है जो डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करेगा आगे, ये आगे बढ़ेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन इसके पहले कि आगे डिवाइड करे, ये नॉरिशमेंट लेगा, नॉरिशमेंट लेकर थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर देगा। ग्रो करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा और मोटा ताज़ा दिखेगा ऐसे। अब इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे।
ये भी 2n is equal to 46. So this is primary spermatocyte, 2n is equal to 46. Now it further undergoes meiotic division. अब ये meiotic division होंगे दो बार. आपको मालूम है मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. पहला वाला मियोटिक होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए. ये मियोसिस 1 यहाँ पर चालू हुआ है, मियोसिस 1. और आपको मालूम है मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो जो 2n था ये n हो गया. यहीं पर लिख दिया जाए, ये 2n था और ये n हो गया और ये भी n हो गया. फिर से नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब जो है एज इट इज रहेगा, यानी मियोसिस 2 होगा. मियोसिस 2 होने के बाद अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, ये एज इट इज रहते हैं, यानी ये माइटोटिक टाइप होते हैं. तो अब देखिए ये स्पर्मेटिड्स कहलाएंगे, 4 बन गए. ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये स्पर्मेटिड सब कहलाएंगे. और अब धीरे धीरे इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे. ये जो स्पर्मेटिड है हेवी एंड नॉन मोटाइल है, धीरे धीरे इनका हिस्सा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो आगे का हिस्सा बना देगा. इसे यहाँ पर एक्रोसोम कहलाएगा. फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये न्यूक्लियस आएगा इसके अंदर यहाँ पर, और ये धीरे धीरे एक्सियल फिलामेंट्स, ये देखिए ये मोटाइल हो गया. अब ये कहलाएंगे स्पर्मेटोजोआन्स. इस पूरी प्रक्रिया का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस. फर्स्ट पॉइंट, इट बिगिंस एट पुबर्टी. सेकंड पॉइंट, here formation of spermatozoans from spermatogonium occurs. From spermatogonium to spermatozoans, from diploid to haploid. Ultimately it takes कितना 64 to 65 days, 2 months, and it includes mitosis and meiosis both. First mitosis, then meiosis. This phase is called, कौन सा फेज? ये फेज जो है ये माइटोसिस का फेज है, ये मियोसिस का है. यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ ग्रोथ हुआ, और यहाँ पर आप देखिए मैच्योरेशन हुआ. फिर यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पर डिफरेंशिएशन. ये जो डिफरेंशिएशन है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआन्स बनते हैं, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं या स्पर्मिटेलियोसिस कहते हैं. इस समय तक इनको नॉरिशमेंट मिलता रहता है. किससे? ये नॉरिशमेंट लेते रहते हैं सर्टोली सेल से. स्पर्मेटोजोआन्स जब ये कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआन्स, मतलब ये नॉन मोटाइल हेवियर से ये लेस नॉन मोटाइल हेवियर से ये लाइटर और मोटाइल बन जाते हैं. तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआन्स बन जाते हैं, इनको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. ये लास्ट प्रोसेस है, इसको स्पर्मिटेलियोसिस भी कहते हैं. और इस समय स्पर्मेटोजोआन्स बड़े बड़े जो सेल इनके अंदर होते हैं सर्टोली सेल्स, उससे नॉरिशमेंट लेते रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं उसमें. फिर यहाँ से जब ये निकलते हैं तो इसको कहते हैं स्पर्मिएशंस. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से निकलते हैं उसको कहते हैं स्पर्मिएशन, लेकिन पूरे बॉडी से निकलते हैं इजैकुलेशन. अब पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस. यानी आप देखिए शुरुआत में ये 2n थे, फिर n हो गए. शुरुआत में मियोसिस हुई, फिर माइटोसिस हुई, फिर मियोसिस हुआ. शुरुआत में ये स्पर्मेटोगोनियम थे एक, फिर उससे बना कितना? एक स्पर्मेटोसाइट उससे लिया गया. फिर एक स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर उससे 4 स्पर्मेटिड बना, और फिर 4 फंक्शनल स्पर्मेटोजोआन्स एक बार में बने. यानी मेन स्टेप में आप याद रखिए यही है इमैच्योर जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम. ये डिप्लॉयड था सिंगल, उससे बना सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉयड हुआ. अब यहाँ से ये देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बने हैं, हैप्लॉयड बने. 2 स्पर्मेटिड बने नहीं, 4 स्पर्मेटिड बने, हैप्लॉयड बने, और 4 स्पर्मेटोजोआन्स हैप्लॉयड बने. तो द फॉर्मेशन ऑफ 4 फंक्शनल स्पर्मेटोजोआन्स फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम in 2 months. This entire process is called spermatogenesis. This is a gametogenesis, a type of gametogenesis in male. Now hormonal control for spermatogenesis.
Hypothalamus is the neuroendocrine structure in forebrain of our body, and that acts as the supramaster endocrine gland that releases GnRH, gonadotropin releasing hormone, that directs anterior pituitary to release two hormones. One is LH, luteinizing hormone, another one is follicle stimulating hormone. LH acts upon Leydig cells of testis. Leydig cells means interstitial cells, endocrine cells. And FSH acts upon, follicle stimulating hormone acts upon Sertoli cells. That is the sustentacular cells or nurse cells, which provide nourishment to the developing spermatozoa. Leydig cells secrete androgen. Androgen means testosterone, male sex hormone, which is highly required for maleness of an individual, testosterone. This testosterone is responsible for spermatogenesis process, spermatogenesis. But here, Sertoli cells secrete inhibin, and that also secretes ABP. Here, Sertoli cells is responsible for spermiogenesis. Factors helping in spermiogenesis means transformation of what? Transformation of spermatids into spermatozoans. If the amount of androgen and inhibin increases in the blood of a male individual, now it goes for what? It goes for negative feedback. Stop the secretion. Stop the secretion. It further directs anterior pituitary and hypothalamus not to secrete more hormones, not to secrete more GnRH, not to secrete more LH and FSH, because androgen and inhibin, all these are in perfect quantity in the blood, so they stop release of GnRH and LH or FSH. So this kind of feedback is called negative feedback. Negative feedback. Okay, this is how spermatogenesis is controlled. So this is hormonal control of spermatogenesis in male. Hormonal control. First hypothalamus, then anterior pituitary, and then these two cells of testis. They regulate the process of spermatogenesis in human male. That you have to learn. So enjoy your studies and subscribe my channel, Planet Bio. Good luck. God bless you.